Dear student, class 12th, subject chemistry, content name electrochemistry. At this content, we will study electrode potential, EMF, electromotive force, standard electrode potential, measurement of standard electrode potential with help of hydrogen electrode potential. We have also studied the electromotive force and potential difference and also studied the difference between electromotive force and potential difference. After that, we will study the electrochemical series, application of electrochemical series in our daily life and different branches of chemistry. So dear student, we are going to study the electrode potential. Dear student, when a metal comes in contact of a such solution that is known as the electrolytes, means such a metal come in contact of a solution which contain its own ions, then according to Nernst equation, means solution pressure theory, which is given by Nernst, assumes that metal comes contact with electrolytes. Then what is the possibility? Possibility is first, electrode metal has a tendency to give electrons, then metal atom get oxidized to form cations. When electrode form the cations, it leaves electron on the electrode. Then the deposition of electrons or negatively charged particles get collected on the electrode, and after that preventing further oxidation of more metal atoms. Stage number second, if metal ion is solution have a tendency to get reduced, then they will gain electron from electrode. Now electrode will become positively charged. At last there will be an interfacial equilibrium between metal ion and metal atoms. Production of positive and negative charges on metal rod is charge get separated due to equilibrium between metal and produced its ion. This generate a potential between metal rod and a solution. So we can say that electrode potential which is produced between metal substance and a solution is known as a half cell potential or single electrode potential. Actually, single electrode potential is a tendency of electrode to accept or release the electron. According to modern theory, half cell reactions are written in reduction half cell and their potential as reduction potential. Always, reduction potential means tendency to accept electron, while oxidation potential means to release electrons. Both these potential are numerically equal with opposite signs. The oxidation potential and reduction potential show the half cell reactions. Dear student, जब हम किसी मेटल रॉड को किसी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं, वह सॉल्यूशन उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का वर्क करता है। जैसे ही वो मेटल रॉड उस सॉल्यूशन के टच पर आता है, नर्नस्ट के सॉल्यूशन प्रेशर थ्योरी के अकॉर्ड या तो वो ऑक्सीडेशन को परफॉर्म करेगा या तो रिडक्शन को परफॉर्म करेगा। कंडीशन फर्स्ट ये बनती है कि जब मेटल सॉल्यूशंस के कांटेक्ट में आती है, तो यदि उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडेशंस की है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ऑक्सीडाइज होने पर इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से निगेटिवली चार्ज पार्टिकल या निगेटिव चार्ज उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर इंक्रीज होगा। अदरवाइज कंडीशन इज सेकंड, मेटल आयन जब सॉल्यूशन के कांटेक्ट पर आएगा देन वो रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने पर वह इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करने से वो पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना शुरू होगा और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से वो अपने पोटेंशियल को मेंटेन करेगा। सो वी कैन से दैट half cell reaction are written in form of reduction, and that potential is known as the reduction potential. Another part means another electrode we perform the oxidation, means half cell reaction perform the oxidation, so that electrode have bear the potential of oxidation.
So dear student, after that potential difference, we are going to study the electromotive force. Electromotive force means when we completed the cell, means we added the positive and negative charge, anode and cathode, and both are produced by cations and anions. Then a complete cell is formed when two half cells are joined by an outer circuit. The energy supplied by the cell to maintain the flow of unit charge through the whole circuit is known as the electromotive force of the cell. Means we can say that when we take a unit charge in a complete circuit and that unit charge run along with the whole circuit initially to final stage, that energy which is required to rotate and revolve that unit charge in the whole circuit initially and finally, that is known as the electromotive force. So dear student, हमने अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में जाना। हमने यह जाना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम किसी मेटल रॉड को कैथोड या एनोड के फॉर्म में उसे उसके इलेक्ट्रोलाइट्स के कांटेक्ट पर लाते हैं, तब दो अपोजिटली चार्ज मेटल्स पर हमें एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। इन दोनों क्योंकि एक पर ऑक्सीडेशन और दूसरी पर रिडक्शन रिएक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो कि इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है, प्रोड्यूस हुए आयंस की अमाउंट को शो करता है, इंटेंसिटी को शो करता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस वेपर और कितने इंटेंस फॉर्म में हुआ है, और उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होने के कारण जो भी पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ देखने को मिलता है वही उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जबकि जब हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेल के फॉर्म में आउटर सर्किट से ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद यदि हम यूनिट चार्ज को उस पूरी सर्किट में इनिशियल से फाइनल तक रन कराना चाहते हैं, तो जो भी एनर्जी वो रिक्वायर्ड होती है उसकी या हमारे द्वारा जो भी एनर्जी उसे प्रोवाइड की जाती है जिससे यूनिट चार्ज पूरे सर्किट पर अलॉन्ग विथ रन करता है, तब हम उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम पर जानते हैं। सो कम ऑन द content standard electrode potential. It is the important question for your annual exams. Electrode potential is the potential developed between electrode and its solution. Its solution, you also know that its solution is known as the electrolytes. If in the half cell the metal rod is suspended in a solution of 1 molar concentration and the temperature is kept 298 Kelvin, the electrode potential is termed as a standard electrode potential. Means how to set up the standard electrode potential? Means we take a metal and their solution, but solution have the concentration in 1 molar and their temperature is 298 Kelvin. It is not possible to measure the absolute potential of a single electrode, but electromotive force of a cell made up of two electrodes can be measured with the help of potentiometer, which is the difference of electrode potential of its two electrodes. So we can say that standard electrode potential means energy of E cell equals to E1 minus E2. E1 is always greater than E2. Therefore, potential of one electrode can be known by comparing it with the other. In this way, standard electrode potential of any element or metal can be known by comparing it with a reference electrode. For this purpose, molar hydrogen electrode is chosen as the reference electrode. One question is here, why we take the hydrogen electrode, molar hydrogen electrode in reference of standard electrode potential? Because hydrogen is a unique substance, standard electrode potential of all elements are measured with the reference to hydrogen. Standard hydrogen electrode means SHE or normal hydrogen electrode means NHE. So dear student,
We have set up a ideal electrode which is referenced with the hydrogen with 1 molar concentration, that is measure or compare the potential difference in front of or in other way to that electrode are joined together on the cell. A standard hydrogen electrode is also called normal hydrogen electrode. In this, a rectangular platinum plate is taken which are coated with platinum black. This platinum plate is attached with a wire of platinum kept in a glass tube. Within the tube, this wire is dipped in a small amount of mercury. Platinum plate is surrounded by a glass tube, has an inlet for H2 gas at the top. Pure hydrogen gas is passed through this inlet at 1 atmospheric pressure. A number of holes are present in the vents in the jacket for the escape of excess of hydrogen gas. This electrode is kept in 1 molar acidic solution and hydrogen gas is passed at 298 Kelvin or 25 degree centigrade temperature and 1 atm pressure means 1 atmospheric pressure. Some part of gas is absorbed by platinum plate while the excess of H2 gas is scraped through the hole. मीन्स हमने ये जाना कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम पर भी जानते हैं. इसमें हम सेटअप क्या करते हैं, वी टेक अ रेक्टा एंगुलर प्लेटिनम प्लेट. हम एक रेक्टा एंगुलर प्लेटिनम प्लेट लेते हैं और उसे कोटेड कर देते हैं प्लेटिनम ब्लैक से. यह प्लेटिनम प्लेट अटैच की जाती है एक वायर से जो कि प्लेटिनम से ही मिलकर बनी होती है और इस अटैच वायर को हम एक ग्लास क्यूब के अंदर कीप कर देते हैं. विद इन द ट्यूब हम ट्यूब के साथ इस वायर को डिप कराते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी में. प्लेटिनम प्लेट को सराउंडेड किया जाता है एक ग्लास ट्यूब के द्वारा जिससे कि उस पर हाइड्रोजन गैस फिलअप की जा सके. साथ में प्योर हाइड्रोजन गैस हम इस इनलेट के द्वारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इस पर पास करते हैं. जो भी हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब की जानी होती है प्लेटिनम के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर दी जाती है. एक्सेस हाइड्रोजन गैस इनलेट के द्वारा पास आउट कर दी जाती है. साथ में हम यहाँ का टेम्परेचर 298 केल्विन. सॉल्यूशन हम 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं और इस पर जाकर हम हाइड्रोजन गैस को उस पर फिलअप कर देते हैं. इतना करने के बाद आफ्टर सम टाइम एन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन at electrode and hydrogen ion present in the solution. Dear student, one word is mentioned on here, no absorption. It is the adsorption. So, what is the adsorption? Adsorption is the surface phenomena where any molecules, ions, radicals or gases get attached for some time for in case of free bonding. That is known as the adsorption, means it is a surface phenomena. तब हम ये देखते हैं कि जब हाइड्रोजन गैस उस प्लेटिनम प्लेट पर एडजॉर्ब होती है, एडजॉर्ब होने के बाद हाइड्रोजन एट इलेक्ट्रोड एंड हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. इस तरह से हाइड्रोजन गैस आयोनाइज होती है. हाइड्रोजन गैस आयोनाइज्ड एंड फॉर्म द 2H+. So dear student, mention on here, hydrogen gas get ionized, form 2H+ and 2E-. Electrode formed in this way is called standard hydrogen electrode SHE and it can be represented as follow. इसे हम इस वे पर फॉलो करते हैं. मीन्स प्लेटिनम एंड हाइड्रोजन गैस 1 बार पर प्लेटिनम से एडजॉर्ब होती है. H+ और इसका मोलर कंसंट्रेशन 1 होता है. सी जो रिप्रेजेंटेशन है वो मोलर कंसंट्रेशन का है. हाइड्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, 2H+ में रिलीज करता है. 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद वही 2 इलेक्ट्रॉन उसके द्वारा फिर से एब्जॉर्ब करके वो गेट रिड्यूस हो जाता है. इस तरह से हमने देखा कि एक आइडियल इलेक्ट्रोड हमने फॉर्म किया जिसकी हेल्प से हम एक अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करेंगे. If the above mentioned hydrogen electrode is connected with an electrode in which concentration of electrolytes is 1 molar, the EMF means electromotive force of a such cell would be standard electrode potential of electrode, since potential of reference electrode SHE is 0. So dear student, हमने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया. अब इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद हम ये जानेंगे कि हाउ टू मेजर द
standard electrode potential. For measuring standard electrode potential of an electrode, a cell is set up with two half cells, which has the electrode whose standard potential is to be determined and other has a standard hydrogen electrode. EMF of this cell is noted. If given electrode form a negative terminal, means in form of anode, then it is said to be a negative electrode potential. After that, if given electrode form a negative terminal, anode, then it is said to be negative electrode potential. If this form positive terminal, means in form of cathode, then it is said to be positive electrode potential. Means potential difference between both electrodes can be determined with help of voltmeter. So you take two instruments, first potential meter or second is the voltmeter. Voltmeter help you to determine the potential difference of two half cells. The deflection of needle of voltmeter shows the direction of flow of electron which is from anode to cathode. मीन्स हमने ये जाना क्या, यदि हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं कि दो हाफ सेल हम बनाते हैं. एक हमारे पास SHE होता है और उस अननोन इलेक्ट्रोड को हम उससे क्या कर देते हैं, कांटेक्ट मिला देते हैं या सर्किट में ऐड कर देते हैं. सर्किट में ऐड होते ही यह वह न्यू इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और या तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है. गेन और रिलीज होने पर या तो वो कैथोड की तरह वर्क करता है या तो वो एनोड की तरह वर्क करता है. यदि वह नेगेटिव टर्मिनल मीन्स एनोड की तरह वर्क करता है तब उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है. अदरवाइज इफ द पर्टिकुलर अननोन इलेक्ट्रोड वर्क एज अ कैथोड देन इट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मीन्स यदि उसने एनोड के रूप में वर्क किया मीन्स उसका पोटेंशियल निगेटिव है. इफ दैट इलेक्ट्रोड इज वर्क एज अ positive center, that is the cathode. Suppose standard electrode potential has to determine for Zn and Zn2 plus. यदि हम Zn और Zn इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड डिप कराते हैं Zn2 प्लस आयन में. एक्चुअली उसका जो मोलर कंसंट्रेशन होगा वो 1 मोलर ही होगा और उसे SHE से हम ऐड कर देते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन बिटवीन बोथ इलेक्ट्रोड विद हेल्प ऑफ वोल्टमीटर. और दोनों के बीच में जो वोल्ट मीटर लगा हुआ उससे हमें पता चल जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसका कम और किसका ज़्यादा है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज जीरो. हेंस EMF ऑफ दिस सेल बी इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn एंड Zn2 प्लस. एक्चुअली हमने पहले से डिटरमाइन कर रखा है कि हमारा SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है तो उसके सामने लगने वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वह या तो पॉजिटिव में होगा या तो निगेटिव में होगा. जिस नेचर पर होगा वो उस नेचर को शो करेगा और हमें क्लियर हो जाएगा कि ये एनोड के रूप में वर्क कर सकता है या कैथोड के रूप में वर्क कर सकता है. आफ्टर दैट सिमिलरली ऑन द connecting copper electrode with the hydrogen electrode, it is observed that copper electrode form positive terminal cathode of the cell. Therefore the following type of cell is established. It is known by potentiometer reading that EMF of this cell is 0.34 voltmeter, 0.34 volt, and copper electrode form a cathode. Therefore electrons flow from standard hydrogen electrode toward copper electrode. Hence SHE work as a anode and copper electrode work as a cathode. All the description so in form of diagram. So you take the Zn rod and Zn2 plus in form of 1 molar concentration, and also you take the hydrogen SH in form of SHE, and both are get connected to each other. Then it is gain or loss the electron. Okay dear student. Dear student, after that electrode potential of any half cell may be positive or negative. Negative value denote that the tendency of metal to donate electron is more than hydrogen. Note this point. जो भी इलेक्ट्रोड आपने SHE के सामने सेटअप किया है या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा. सपोज देन यदि वह सेंटर निगेटिव वैल्यू की ओर डिनोट करता है, इसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीडेशन तेज से परफॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तेज से रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तेज से वहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं. किससे ज़्यादा, SHE या हाइड्रोजन से ज़्यादा. इसी तरह यदि वो पॉजिटिव वैल्यू डिनोट करते हैं आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं इज लेस देन हाइड्रोजन.
मतलब हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है। तो अपन ये समझिए कि यदि आपने अननोन इलेक्ट्रोड को निगेटिव के फॉर्म में पाते हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन उसके द्वारा ज़्यादा डोनेट किए जाते हैं कंपेयर टू हाइड्रोजन। दूसरी तरफ यदि वह पॉजिटिव सेंटर बनता है, इसका मतलब हाइड्रोजन SHE के द्वारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं जो भी आपने उसके सामने सेटअप किया है। ऑन कपलिंग एनी गिवन इलेक्ट्रोड half with a standard electrode of hydrogen through a metallic wire, if reduction take place instantly, that is electron are flowing from H electrode toward to given electrode, say Q copper, then after that the electrode potential is called standard reduction electrode potential. Similarly, if oxidation take place at the electrode when it is coupled with standard hydrogen electrode, that is electrode are flowing from zinc toward hydrogen electrode, then electrode potential in state is called standard oxidation potential. Nowadays, International Union for Pure and Applied Chemistry, or in IUPAC system, reduction electrode potential is considered as a standard electrode potential, and electrode potential of element may be represented in term of reduction potential. Reduction potential is expressed by negative sign and oxidation potential by a positive sign. In European system, opposite sign are used, that is negative sign of oxidation potential and positive for reduction potential. Reduction and oxidation of any elements are numerically equal, but they have opposite signs. In order to obtain the standard reduction potential for the reduction reaction, we have to reverse the sign of standard oxidation potential while the magnitude is kept constant. So dear student, हमने अभी हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE, NHE, हाउ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड, इनके बारे में डिस्कस किया. We are going to discuss what is the difference between electromotive force and potential difference. Electromotive force is the potential difference between the two electrode of the cell when no current is flowing in the circuit, means circuit is open. मीन्स यदि सर्किट को हमने क्लोज नहीं किया और यदि उसमें हम यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में दौड़ाना चाहते हैं तो उसको दौड़ाने के लिए हमें कितनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है. जबकि पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड अंडर एनी कंडीशन. EMF कैन बी मेजर बाई पोटेंशियोमीटर मेथड ओनली. मेंशन दिस आंसर. Electromotive force can be measured by potentiometric method only. मीन्स EMF को केवल पोटेंशियोमीटर मेथड के द्वारा ही मेजर किया जा सकता है. बट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बाय अ सिंपल वोल्टमीटर. EMF is the maximum voltage that can be obtained from the cell. Otherwise, potential difference is less than maximum voltage that can be obtained from the cell or EMF of the cell. Work done by cell is maximum when calculated by EMF. Work done is less than maximum when calculated by potential difference. So here two major difference. First major difference, EMF can be measured by potentiometric method only. Beside, potential difference is measured by simple voltmeter. It is the first major difference. Second, work done by cell is maximum. Then when calculated by EMF, किसी भी सेल के द्वारा मैक्सिमम वर्क या मैक्सिमम सप्लाई एनर्जी कितनी की गई है, यदि हमें ये काउंट करना है तो हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के थ्रू काउंट कर सकते हैं. यदि वो सिस्टम अपने मैक्सिमम से लेस वर्क करता है तो वर्क डन इज लेस देन मैक्सिमम. यदि हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसी सेल के द्वारा मिनिमम कितना वर्क किया गया है तो हम उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं. सो डियर स्टूडेंट, इट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड potential difference. So we are going to take a new terms, electrochemical series. Electrochemical series, in previous classes you have studied a list of element or ions.
arranged in the increasing order of their standard reduction potential, which are determined with the respect of SHE. Standard hydrogen electrode is called electrochemical or activity series. At international level, standard reduction potential is considered standard electrode potential E0. Hence, in standard reduction potential of different elements are represented in form of standard electrode potential. मीन्स यदि हम एलिमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पर हम अरेंज करते हैं. Dear student, we are going to study the electrochemical series at list of element or ions arranged in the increasing order of their standard reduction potential, which are determined with the respect of SHE, is called electrochemical series or activity series. The following characteristics are shown by the electrochemical series. First, chemical reactivity of metal in electrochemical series decrease downward, that of metal increase downwards. Greater the standard reduction potential, higher the tendency to accept electron to undergo reduction. The more will be the easy with which forward reactions take place and elements or ion will be a strong oxidizing agent. Example, F2 is a strong oxidizing agent. Greater the value of S, standard reduction potential, smaller the tendency to lose electron to undergo or oxidation. The more will be the easy with which backward reaction take place and the element or ion will be a strong reducing agent, just like a lithium is a strong reducing agent. Metal placed above the series can displace the metal placed below from their solution, that is metal with high electrode potential get reduced by the metal which low electrode potential. It is a very important point. Metal placed above in the series can displace the metals placed below from their solution, that is a metal which high electrode potential gets reduced by metal with low electrode potential. Reducing agent that are stronger than hydrogen gas are placed above hydrogen while weak one are placed below. A given metal in the series will reduce the ion of all metals that are below its, and given ion will oxidize all the metals that are above it. The metal or elements placed above hydrogen will liberate hydrogen from its, or metal having electrode potential lower than hydrogen will be liberate hydrogen from acid. Oxidation potential of positive ions is in series decrease on moving upward. Electronic positivity of metal in series decrease on moving downward. Means we can say that lithium is the most electropositive elements and fluorine is the most electronegative elements, means the best or best reducing agent is lithium and best oxidizing agent is fluorine. So after that we are going to study the application of electrochemical series or activity. First, to determine the relative strength or difference of oxidizing agent, the higher the electrode potential of an element to accept electron, the stronger oxidizing agent it is. Therefore, chlorine is a strong oxidizing agent. Comparison of tendency to form cations of different metal and their reducing strength. To predict that whether the reaction of metal with dilute acid would be liberate hydrogen gas or not. यदि हम किसी मेटल की रिएक्शन किसी एसिड से कराते हैं तो उस समय हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी हम एक्टिविटी सीरीज के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं. Metal which lies above the hydrogen in electrochemical series can reduce H plus ion to hydrogen and hence liberate hydrogen gas on reaction with dilute acid. While those metals which are below hydrogen such as Cu, Hg, Ag, Pt, Au cannot replace by H2. Some metals like iron, zinc react with dilute acid like HCl, H2SO4 to liberate hydrogen gas, while some metals like copper, silver do not liberate hydrogen gases with dilute hydrochloric acid and dilute sulfuric acid. Means हमने ये जाना
कि मेटल्स जो कि हाइड्रोजन के एबव होती हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन वहाँ पर रिड्यूस होता है और रिड्यूस करने होकर के वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। Next application is that displacement reactions. Metal that are placed above in the electrochemical series can displace metals that are placed below. Metal extraction. It is the so much important use of electrolytic series, that is the metal extraction. More active metals can displace less active metals from solution of their salt. This property is need to extraction of metal. Next application is electroplating. The process of depositing a thin layer of one metal over the other thin layer of another metals, it is known as the electroplating. Copper, iron, bronze are coated by a thin layer of gold, silver, nickel, chromium, etc. through the electrolysis and electroplating. Normally, for the prevention of corrosion, a highly reactive metals is electroplated by a less reactive metals. For example, prevention of corrosion of iron, it is electroplated by tin metal. Zinc may be also used for electroplating instead of tin. When zinc is used, then process is called galvanization. Purification of metal. Anode of impure metal and cathode or pure metal plate are placed in the salt solution of metal. When electric current is passed, metal ions are neutralized and are deposited as a metal atom at a cathode, and impure metal from the anode move in the form of ions into the solution. Thus, pure metal is deposited as the cathode and impurities go into solution or precipitated out. Electropositive nature of metals. Determination of electromotive force of a cell with help of electrochemical series. Assumption of probability of cell reaction. Say we have to find probability of occurring following reaction or not with help of electrochemical series. At next content we will study Nernst equation and pressure theory. Also study the cell, primary cell, secondary cell and batteries. Thank you student. Have a nice day.